मैंने कभी सोचा नहीं था कि तन्नाज़ किताब लिखेगी, क्योंकि ये तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, तन्नाज़ ने कर लिया, तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे प्रेरणा मिल रही है आज कि मैं खाली सोचता जा रहा हूँ। स्क्रिप्टें तो बहुत लिखी, किताब एक लिखी है, वो भी गुजराती में। तो तन्नाज़ से आज मुझे एक अलग तरह का लाइफ कोचिंग मिला कि भाई जो सोचते हो वो करो। सो इफ़ शी कैन सो कैन आई। ये प्रेरणा मुझे इस किताब से डेफिनेटली मिली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये पढ़ें, बिकॉज़ तन्नाज़ की कहानी मुझे पता है। तन्नाज़ को मैं जानता भी हूँ तकरीबन 35 साल से, और उसकी पूरी उसका करियर, उसका जो रोड मैप है वो मैंने देखा है, उसकी जर्नी, उसका सफ़र देखा है। और इस मोड़ पर ये जो चैलेंज तन्नाज़ की ज़िंदगी में आया और उस चैलेंज को नेविगेट करते हुए उन्होंने न सिर्फ ये किताब लिखी, लेकिन दूसरों को प्रेरणा देने के लिए एक पूरा मार्ग चुना है उन्होंने।
तो उसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग ये पढ़े, इससे प्रेरणा लें और तनाज़ की तरह अपने ऑब्स्टेकल्स से मुकाबला करने की ताकत उनको मिले। Have I surprised everybody? Yes, because हर एक शख्स के ज़िंदगी में एक ऐसा पहलू होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। सो हर कोई ऐसा ही सोचता है कि आई एम जस्ट अ कॉमेडियन, आई एम जस्ट लाफिंग ऑल द टाइम, खुश मिजाज, जस्ट हैप्पी गो लकी। लेकिन ये जो पहलू है मेरी ज़िंदगी का, विच आई हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ, आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी, आई अंडरस्टैंड लाइफ। सो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट एज मच एज आई लाइक टू मेक पीपल लाफ, I love to have intense conversations. So, and I know somebody else who's like that. Because I'm sure सब लोग यही समझते होंगे कि आतिश कपाडिया बहुत कॉमेडी लिखते हैं, खिचड़ी 2 एंड बड़ी दूर से आए हैं। लेकिन नहीं, आतिश की जो राइटिंग है ना, वो हंसाते हंसाते रुला जाता है और रुलाते रुलाते हंसा जाता है, एंड दैट्स रियली इंट्रिकेट। सो आई मीन व्हाट बेटर पर्सन हु आई कैन कम्प्लीटली वाइब विथ। और आजकल लोग बहुत कम पढ़ते हैं बुक्स, सो बट आई नो ही लाइक्स टू रीड बुक्स। सो आई एम लाइक दिस इज़ वन पर्सन, इंडस्ट्री के भी है, मैं अच्छे से जानती भी हूँ। सो आई रियली वाज डिलाइटेड टू इनवाइट हिम। थैंक यू। आई लव एवरीथिंग दैट तनाज़ डज़, और तनाज़ हमेशा से एक कलाकार रही है, और आई थिंक एक अच्छा कलाकार ही अच्छा लेखक भी बन पाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने डाइवर्स रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की हैं, चाहे वो आप इंडस्ट्री की बातें कर लें, चाहे पर्सनल लाइफ की बातें कर लें। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट हर बुक लॉन्च। आई बीन वेटिंग फॉर दिस बुक टू कम, and I love that it's a hopeful, it's a positive book. And I think in times like this, we need people like Tannaz with real life experiences to talk about this and inspire other women and men and talk about their journeys. So I'm very excited. Thank you so much. Thank you. Yes. Absolutely not. It doesn't surprise me. She's a walking, talking inspiration. She's written her journey in this book about all the struggles that she's had and how she overcomes it. And I think it's only fair that we all here support each other, and we all have gone through our journey. So it's through her journey we actually relate to our journey. So it's fun, and I'm so happy for her to actually make this decision of writing a book, because always she's like talking inspirational words, and I mean, I come from a background of psychology as well, so it's like I can relate to what she's talking, and she's always giving this inspirational talks, and there's never a dull moment with her. And I'm glad she took this step ahead and actually made it commercial and public, that you can actually read about her life and her inspiration and gain some benefits out of it. Thank you. Yes. Yes, yes. It doesn't surprise me, very honestly, it doesn't surprise me. Because I think it's high time, we all branch out into different things. And Tannaz has always been a good orator. She's always been very, very good on stage. I think this is something different, and for years I have known her, and I have always seen her kind of motivating others and speaking the way things are written in this book. Actually, she talks about these things a lot to the family and her friends over the years, and I think this wasn't really a surprise. But it's nice. I feel happy. I feel good. Congratulations. I wish her all the best. Many more books to come, Tannaz, and yeah, congrats, because it's a great feeling. You've kind of encouraged so many other women to do exactly what you've done. So great, yeah.
And I guess one more thing, you know, all this is just within us. We need to take the right path, and these books like these just reassure that yeah, you're going the right way, you know. So She is just another actress, hollow, you know, living in a cocoon is what I thought about her, unless and until I did not read this book. When I read this book, I understood that, you know, pain and troubles is just not meant for the ordinary, but also for the extraordinary. She is an extraordinary woman. I hardly knew her till I did not read this. Once when I read it, I realized who she is. And I think everybody, ordinary and extraordinary, should all try and read this book. This is an inspiration, this is a journey from an extraordinary back to an ordinary with a lot of pain and trouble, and then becoming an extraordinary, making it, penning it down all on words and bringing it to us. Thank you so much. Just give up. जी बिल्कुल, तनाज़ मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है एंड हम लोग का एक कोर क्लोज सर्कल है किटी गर्ल्स का, कश्मीरा शाह, माई सेल्फ, तनाज़ ईरानी, पूजा बैनर्जी, रोहित वर्मा एंड आई एम फॉरगेटिंग द 6th person, सारा, शील किल मी, बट येस हम लोग का एक 6 गैंग है. सो ऑफ कोर्स वी हैड टू बी हियर फॉर तनाज़ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड शी इज़ रॉक्ड. आई रेड द बुक, आई रेड मोस्ट ऑफ इट, और उसमें हम लोग का भी जिक्र है बुक में, and so we had to be here to support everything for her. Wishing her all the best. Just take so many years, आपको एक author बनी, इसलिए एक inspiring subject होता है. If I can, so can you. आप क्या कहेंगे? It's such a heart-touching one. You know, the wordings here, they mean a lot, and it applies to each one of us. Amazing is a thought. If I can be honest with you, मैं जब उससे मिलता हूँ, बात करता हूँ, very talkative to the utmost, and that's what she's penned down. The starting also, what she's written there is, मेरे husband और मेरे बच्चे बोलते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो I thought it's better I now pen it down, and that's the way you should have the spirit to take things forward. Salutes to this woman. I'm telling you, in the modern times today, this is the spirit which takes one forward. Hats off. Thank you. hi. Yes. Yeah, I know. That was a surprise. It does not surprise me that she has released a book because she is absolutely talented. She has a way with words, and that is why we get along. मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा बोलती है और आप तो सब जानते हैं मैं भी अच्छा बोल ही लेती हूँ. So we get along because of these things, you know. People, though we knew of each other for such a long time, we've never really became friends, and now suddenly last 2 years we became friends. I'm absolutely uber proud of her that she's become a writer, and such a beautiful thing she has written, and I'm in the book.
I'm so surprised and shocked and happy. She didn't tell me this. She just called me one day. I was in America और मुझे बोला कि अच्छा मैं सिर्फ इसलिए फ़ोन कर रही हूँ कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में लिख रही हूँ. मैंने बोला अच्छा मीन्स कहाँ लिख रही हूँ? I'm used to people writing reports and stories on me. She's like, no, I'm writing a book. I said, what? Finally you're writing a book? She said, yes, and there's something that you inspired me by, and so I'm writing. So I'm very excited to read it. मैंने बुक खरीदा है, ऑर्डर किया है, अमेज़ॉन से आ रहा है. आप सब जाइए अमेज़ॉन पे, प्लीज़ खरीदें. थैंक यू. Yes. Yeah. She's now moved into a very beautiful phase of life. She's become a life coach. She's become a motivational coach, and she's penned a very beautiful book. If I can, so can you. Sometimes in life we reach a point where we need some kind of an external stimuli to push ourselves a little more. Life itself teaches you a lot of lessons, a lot of experiences, and if you can share some of them with people who probably need that small little turning, small little tip that could be turn around in your life, what else can you look forward to? So Tannaz has done something similar. She's shared her experiences and her lessons in life in the form of this beautiful book. I'm sure it's going to be received very well. I am yet to go through it, but I'm looking forward, and I can't wait to have a look at it and go through it in deep. I could see the inclination of wanting to motivate people and share her story and everything. And I was very, very pleasantly surprised when I saw about her book. She's a wonderful actor, a beautiful human being, and I'm sure this book is going to be very, very motivating. And I am really looking forward to reading it. Thank you. Sorry, I couldn't hear you. Tannaz has become an author now. What would you like to say? I think Tannaz is a multifaceted personality. इनको मैं तब से जानती हूँ जब से हम लोगों ने बिग बॉस सीज़न 3 में काम किया था, साथ में थे, एक घर में बंद थे, और तब से मैं उनको जानती हूँ, तो उसको काफ़ी साल हो गए. शी इज़ अ फैब्यूलस एक्टर, ऑफ कोर्स ये तो सभी जानते हैं, अ ग्रेट मदर. लेकिन अब बिकॉज शी हैज़ गॉन टू द नेक्स्ट लेवल एंड बिकम एन ऑथर, आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा उन्होंने बुक लिखा होगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इट. Thank you so much. थैंक यू. 6 years completed. I really love the title of this book. This is like, it's very touchy. I want to go through the entire book, then I will understand exactly what is this. I'll just say all the best to Tannaz for that. It's a very big day. Yesterday was a Nowroz and today is like a book launch, which is a very right date they have chosen.
Thank you. Thank you. तनाज़ के साथ आपकी पुरानी दोस्ती आप एक ऑथर बन गई हैं। Does it surprise you in any way? बहुत बहुत मेरी नज़र में तनाज़ के लिए इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है। मुझे हमें पता ही नहीं था कि शी इज़ नो डाउट वेरी टैलेंटेड। राइटिंग वाला ये मामला इज़ वेरी न्यू टू मी, बट कहीं ना कहीं ये टैलेंट उसमें है। ये जब हम प्ले कर रहे थे तो उस वक्त ऑन द स्पॉट सीन चेंजेस हो जाते थे, इमीडिएटली कुछ लाइंस चेंज कर देती थी वो। तो वो एज अ डायरेक्टर या प्ले पॉइंट ऑफ व्यू या सीरियल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये टैलेंट तो था, बट यू नो टू राइट अ बुक इज़ समथिंग। सो आई एम श्योर कंटेंट सॉलिड होगा and I wish her all the best for this new inning, and that's it. I think this is so inspiring and incredible कि you talk about all the struggles and everything is not beautiful and shining and outstanding the way it looks. There are lots of ups and downs in everybody's life, whichever walk of life you come from, and it's so important for each one of us to bring out your story and tell us what are these things, so the future generation that's coming, they can learn, they can read and understand how to simply just grow in life. Thank you. Totally different. And मैंने सिर्फ 2 चीजें बोली तनाज़ को, wow, you achieved, besides acting you achieved something like this. I wish you could have done this a couple of years back. मेरे दोस्त, you know, कुशल पंजाबी को शायद हम बचा सकते थे. It is a very hard-hitting statement, but the fact is that इतना करीब था. Reality shows this, that the fittest man at 40. So it need not be your physical power, your physical energy. The fittest and fastest at 40 at that given point of time undoubtedly was him. And one fine day he's gone. So it's all not about your physical power, but यहाँ क्या चल रहा है? और सबसे better when Tannaz as an actor came out, हम actors इतनी खोखली लाइफ जीते हैं। आधी तो हमारी जिंदगी Instagram पे होती है। हमारे पीछे क्या हो रहा है घंटा किसी को पता नहीं। मतलब there are EMIs which are Hi everyone and thank you so much. या कुछ होता है ना, मतलब 15-17 साल के बाद तो husband is taken for granted. नहीं ऐसा नहीं है, but सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आज यहाँ पे है मेरे बुक लॉन्च पे, सिर्फ आप सेलिब्रिटी नहीं हो इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया है। हमने आपस में कुछ वक्त गुजारा है जहाँ पे शायद मैंने अपने दिल की बात आपको कही या शायद आपने मुझे अपने दिल की बात कही। हर एक शख्स जो इस रूम में है, मैंने कुछ तो क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड किया होगा। लोग कहते हैं ना कि पैसा तो कोई भी दे सकता है, पैसा एक बार आप दोगे खत्म हो जाता है। किसी को खाना खिलाओगे वो एक बारी का खाना खा के हजम हो जाता है, लेकिन अगर आपने अपना कीमती वक्त या आपने अपना कोई किस्सा या स्टोरी किसी के साथ शेयर किया और वो स्टोरी के बल आपने उस इंसान का कुछ बदलाव देखा हो तो आपने जिया है, तो आपने जिया है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। लोग सोचते होंगे कि फेम, मनी, गुड लुक्स, मेकअप वगैरह वगैरह आपको इंसुलेट करता है कोई हादसा से या डिप्रेशन से, लेकिन ये बात है सो फ्रॉम द ट्रूथ दैट आई कैन नॉट टेल यू। और ये बात मैं ऑफ कोर्स जानती थी कि हर एक शख्स डिप्रेस होता है, कुछ अच्छी यू नो ये सारी चीज़ें होती है हमारे इंडस्ट्री में, तो इवन मोर क्योंकि आप सेलिब्रिटी होते हैं, आप हर बार एक नकाब पहन के जाते हैं, आप हर बार एक मास्क पहन के जाते हो और उस मास्क को फिर आप घर पे जाते हो मेकअप के साथ आप वो मास्क उतारते हैं
और फिर आपको वो सही तनाज दिखती है आईने में, तो वो सही तनाज के साथ आप क्या करोगे? It was as simple as that. And this happened to me. जो एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, आपको सारी नॉलेज है, आपने किताबें पढ़ी है, इंस्टाग्राम के वगैरह वगैरह इतने सारे छोटे छोटे चुटकुले आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या था जब मुझे ऐसा लगा कि बस इसके बाद I can't lead this life like this and I can't let whoever I love lead a life like that. ये किस्सा तब हुआ जब 1 साल पहले मैं एक बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन से गुजर रही थी. माय बैक gave way, माय हिप gave way, माय नी gave way. बहुत लंबी कहानी है, उस किस्सा को छोटा सा कर लेते हैं, मुद्दे पे आते हैं. एंड ऑब्वियसली एक एक्ट्रेस जो चल नहीं पाती है, जो कैन नॉट वॉक द रैम्प एंड लुक ग्रेट, उसके दिल पे, उसके मन पे क्या गुजर रहा होगा? आई वेंट इनटू मैसिव डिप्रेशन. आई एम लाइक, ओ माय गॉड, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मैं एक लकड़ी के साथ चल पा रही हूँ, मैं लंगड़ी हो गई हूँ. ऑब्वियसली कोई मेरे साथ बात करेगा तो ऑब्वियसली वो कहेगा, कम ऑन तनाज़, दुनिया में कितने गम है, तुम्हारा बहुत कम है, ऑल दैट वगैरह वगैरह. हाँ, पीपल कैन ऑब्वियसली टेल यू ऑल दैट, लेकिन उस इंसान पे जो गुजर रहा है, nobody can take it away, nobody can share your pain with you. And I was totally depressed. लेकिन एक बात, because I'm a fighter and I'm from a growth mindset, I said no. अगर मेरे पैर नहीं चल रहे तनाज, तो तुम्हारा मन तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है तुम्हारे बॉडी में, use that. और तब I went and enrolled in a class. I saw an ad on Instagram. वापस Instagram, इतना अच्छा दोस्त बन गया हम सब किसी का. मैं इंस्टाग्राम पे गई, एक ऐड देखा, डॉक्टर YSR, वो लाइफ कोचिंग, NLP प्रैक्टिशनिंग सिखा रहा था. मैंने कहा हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, शायद मुझे ये सीखना चाहिए. कुछ तो नहीं कर रही थी, चल भी नहीं सकती थी, नीचे भी नहीं जाती थी, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, PTA मीटिंग सब कुछ कैंसिल, बिकॉज आई हैड टोटली लॉस्ट मेरी वजूद, सब कुछ. आई जस्ट लॉस्ट एवरीथिंग एंड आई एम नॉट ashamed to say that, because if my story can help somebody else, so be it. I can understand your story, I'll never judge you. So मैंने ये कोर्स किया and then I understood कि हाँ ठीक है, हम सब में वो हमदर्दी है, हम सब एक दूसरे को सलाह मशवरा दे सकते हैं, हम सब एक दूसरे का कंधा पकड़कर चल सकते हैं थोड़ा रास्ता, लेकिन एक सॉलिड सिस्टमैटिक स्ट्रेटजी है टू बी अ लाइफ कोच. मैं एक एनालिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम अ लाइफ कोच. आई ट्रीट द प्रोडक्ट दैट इज यू. जब आप मेरे साथ बात करते होंगे, मुझे तुम नहीं दिखाई दोगे, मुझे वो सारी चीजें जो मैंने सीखी है और मैं कैसे आपको वो स्ट्रैटेजी अपना के वो कैसे मैं आपके जिंदगी में बदलाव ला सकती हूँ, वो मैं सोच रही हूँ. मैं कभी आपको हमदर्दी जताऊंगी ही नहीं, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपने शायद अपने ही जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा. टू बी अ लाइफ कोच इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन. सीक्रेसी हमारे लाइफ कोच में इज द हाईएस्ट पॉइंट. एक भी किस्सा यहाँ से वहां जाता नहीं है. एंड व्हेन यू विजिट अ लाइफ कोच, 1, 2, 3 बार ही बस है, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी. और मुझे कैसे पता? बिकॉज जब मैं सीख रही थी फ्रॉम द बेस्ट मेंटोर, ही विल बी कमिंग सून, ही बाय चांस वो यहीं पे है बॉम्बे में. मैंने ये कोर्स हिंदी में की, ऑनलाइन की, और वो शख्स जिन्होंने मुझे सिखाया वो अहमदाबाद में है, बट बाय चांस ही इज हियर. एंड जब वो सिखा रहे थे, मैं खुद ब खुद आई वॉज गेटिंग सो क्योर्ड. इट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी. और मैंने फिर सोचा कि हर एक आंसू जो मैंने रोए, या हर एक डिप्रेसिंग डे व्हेन आई हैड नोबडी टू टॉक टू, आई मस्ट शेयर इट विद द वर्ल्ड. एंड ऑफ कोर्स मेरा बुक जो है हैज टू बी फिल्ड विद कॉमेडी, बिकॉज वही है तनाज का रग रग में जो बसा हुआ है. इट्स ड्रिज़ल्ड विद कॉमेडी. It's all about the life, it's all about what I've learned, it's all about how I got over it. It is an easy read,
कुछ लोग हैं यहाँ पे लड़कियाँ जिन्होंने मेरा बुक पढ़ा है एंड दे thoroughly enjoyed it. मतलब at one stretch I was like, हाश मैंने कुछ तो अच्छा किया. All I'm trying to say is there is nobody in this room and I'm not even asking you a question. Ali. He's not concentrating. What is my pet name? What is my pet name you call me? Producer साहब. Producer साहब. तो आप producer की बात नहीं मानोगे? अरे तो payment late मिलेगा. हाँ. So I just want to say, I don't want to ask you. Thank you. I'd just like to say a few words. I always believed, since I was a child, that the only way to talk to people who care to listen, and thousands of them at the same time, is through writing a book. Tannaz has inspired me today. She's become a life coach to me because I always had thought of writing books. But I just wrote one in Gujarati. लेकिन अब मुझे ये प्रेरणा मिली है तो मैं लिखना शुरू करूँगा. Her dynamic and her struggle. अभी recent जो इन्होंने बताया अपने बारे में, वो it rings up. I mean it's so close. आज हमारा बच्चा है एक 17 साल का जो म्यूजिक परस्यू कर रहा है और जब एलिसन को पता चलता है और उसे जब महसूस होता है कि यार मैं अब डांस नहीं कर सकती बिकॉज एक्सीडेंट की वजह से वो डांस नहीं कर पाती, तो वो अपने खुशियां जो है हमारा बेटा जब म्यूजिक बजाता है तो देखती होती है अच्छा मेरा हुनर छीन लिया लेकिन मुझे एक बच्चा दिया जिसके पास हुनर है, तो वो अपनी ही लाइफ कोच बन गई जैसे तनाज अपनी लाइफ कोच बनी है. तो मैं हमेशा से मतलब ये फील करता था कि हर किसी की जिंदगी में तकलीफें आती है, उसका रोना लेकर बैठ जाओ तो कुछ होने वाला नहीं है. You have to get up, smell the coffee and move on. And she has moved on and I've seen, now I'm so fortunate that I know another person who has circumvented all the problems that one can face in life and has moved on. So she's a great inspiration. I'm going to make my wife read this book so that उसका हौसला फिर से बुलंद हो जाए और वो फिर से कुछ अपनी जिंदगी में जो है करने की ठान ले. Thank you very much for asking me to inaugurate this book and all the best, and I would recommend that everybody reads this book, takes inspiration and calls her to become their life coach whenever, wherever and as soon as possible. Thank you. So, yes. So just आपको थोड़ा सा फ्लेवर सुनाने के लिए कि बुक किस तरह का है. It's an easy read book, lots of emotions but it's easy read. So who better than Anand to read it for you? I'll try and make it easy. Okay, this is the portion that Tannaz wanted me to read, and yes, it did touch me. They say a person with good health has many dreams, but a person with bad health has only one. And at this point of time, I only had one: to walk again. My walking had become so severely distorted, I had come to lose my confidence. I always prided myself on my energy and ability to do several things in a day and multitask, all of which had come to a grinding halt. I refrained from attending functions, I started avoiding going to school meetings, didn't want to show people this pathetic version of myself. I used to look outside the window and look at all the people going on their evening walks and think, what the hell is wrong with me? Why at this age am I confined to my room and in so much pain? The horror of horrors was that now I had to slowly start rejecting work as well.
I mean, how strange it would be to walk around like an 80-year-old lady, and that too with weird expressions of pain on my face, in a job where I had to be glamorous and confident. Let me assure you, this pain had wholly and entirely started consuming my entire life and existence. देखो हम हर रोज बात नहीं करते हैं, हम कभी कभार बात करते हैं और रोज मिलते भी नहीं है, हम में इतना ताकत नहीं है। बट आज मैं कह रही थी कि आप लोग पढ़ोगे ये वो फलाना ठिकाना, एंड आई वाज सेइंग ये पैराग्राफ से ये पैराग्राफ तुम पढ़ना, तो कैशमेना क्या पूछती है कि अच्छा ये ही बुक से क्यों पढ़े हम, मतलब एक ही बुक में हमारा नाम प्रिंट किया गया है तनाज। हमने शिट यार कैश सिर्फ तू ही ये क्वेश्चन पूछ सकती है, मतलब अब भी डाउट है मुझे बहुत। या अच्छा दिस इज यादव, योर नेम इज देयर बट नो दिस वन इज द प्रॉपर अभी जब ऐसा भी है तो डाउट आएगा ना। हां व्हाट वाज द पेज, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे लाइट बहुत कम लाइट। You have to buy 100 books now. Check it out. हाँ। क्या? Don't check now. देखा ये प्रॉब्लम होता है यार जब आप What is it? This one. Isn't that exact? हाँ बराबर। नहीं मोनिशा always is right. Correct. नहीं बराबर। Influencers are only meant for fashion and lifestyle. Now this influencer is going to make you change the way your mind is going to rule your head, even when everything goes wrong around you. My first step forward, even though it was a limp. So I started making reels at home, which shifted me into a happy state. I did those that didn't have too much movement or where I could just sit and talk. Even in the dancing ones, I cleverly cheated, so you really couldn't make out. I started attending a smattering of functions, the one I could handle going on my own. Every time making up new excuses that I just fell down yesterday or that I twisted my ankle in the gym, etc., etc. I didn't feel like sharing my long and pathetic story with everyone because it would just make me feel defeated again. And I also realized the more you share your entire story with strangers, the more you got a longer list of doctors and healers. And those were not really helping me at all. I even mustered the courage to travel to Dubai and Bangkok with my girl gang. I took a wheelchair at the airport, since there was always quite a bit to walk at the airports and my leg would just give up after 10 minutes. I didn't care what others said or anything. I wasn't going to let this own me. Nor did my friends make me feel bad that they would walk along beside me and use me as a dumping ground for all their little bags. They just went about normally, walking beside me, joking around and taking selfies. There were times when I felt like giving up because of the pain and when the painkillers wouldn't work. So I paused, rested, but make sure to go on once again. That's from me. On one of the trips with my girls, we were struggling back to the hotel late at night, and I was very slowly limping away in pain. I was holding on to my friend Nisha's hand, who had now become my official nurse on all our trips. All of us were. And I said, I'm sure all think that we did bring this grandma along. I'm really sorry, girls. And to this, my other friend Kashmir. Part is, we do not need to speak to each other every day. We just take off from where we left. That is when I decided that I had to take this story to the world, my world. The people who looked up to me. I had to show them that their mind was their best friend. And it could not be just some stories on Instagram. I mean, here I was, an actress, who had to give up everything she loved, could not go to work, and I was going to use my life testimony to help others. I needed a strategy and a system in place. अगर मेरे पैर नहीं चल रहे हैं तो क्या हुआ? मेरा मन तो चल रहा है. So what if my legs weren't working? At least my mind was. My darling Tannaz, you were one leg up on all of us, always, in the past and now also in the future. Love you.
मैम 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 मैं तो दिखा हुआ मैम यहाँ पे मैं बात करूँगा मैम भाई अरे यार वेट वेट Done, guys. Okay, thank you. Thank you. एक मिनट या मैम क्या कहना चाहिए आप बुक लॉन्च पे पहुंचे हैं आप तनाज जी के? It's a moment of pride. तनाज को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और बहुत सारे ऐसे शोज उन्होंने किए हैं जिससे उनकी एक पहचान भी बनी है और आज उनकी स्टोरी सुनकर मैं बहुत रिलेट कर पाई उनकी बात से बिकॉज ऐसी ही कुछ हालत मेरी भी थी, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, सर्जरी हुई थी, मैं भी व्हील चेयर पर थी एंड सो इट वाज वेरी टचिंग एज अ वुमन। आई कुड रियली रिलेट टू हर। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो उन्होंने बोली, व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग एट द एयरपोर्ट्स ऑन अ व्हील चेयर एंड हाउ हर फ्रेंड्स वर हेल्पिंग हर, बहुत सारी चीज़ों से मैं रिलेट कर पाई। ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए एंड राइटिंग अ बुक, वाओ, दैट्स अ माइलस्टोन इन एनीबॉडीज लाइफ। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन आई नो वांट्स टू राइट अ बुक, लेकिन कितने लोग ये एक्चुअली कर पाते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ तनाज एंड आई कांट वेट टू गो। टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? So the title says if I can so you can. It's a very simple and humbling title कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। I think it's just she's trying to establish a relatability and I'm sure that people will be able to relate to this। उन्होंने बड़ी सिंपल तरीके से it's a light read is what she has said। मैंने नहीं पढ़ी है बट जितना भी मैंने सुना आज इस बुक के बारे में I'm really looking बिग बॉस देखते हैं आप? नहीं। मैम आपका अभी फ़िलहाल तो आई एम डूइंग दिस शो ऑन जी कॉल्ड मीट जो चल ही रहा है। उसके पहले आई जस्ट फिनिश लॉकअप एंड एट द मोमेंट आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल। आई एम प्लानिंग टू वेंचर इन टू अ कपल ऑफ बिजनेसेस जिनकी चीज़ें चल रही हैं। आई एम श्योर यू नो दैट आई हैव एन ऑफिस एंड स्टफ, सो दैट्स इट। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग नथिंग मच एज सच बट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ डिफरेंट फ्रंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Tannaz Irani, I think she's a wow woman. I mean, today I heard her story and she's gone through a lot for sure and she's risen like a phoenix is what I can say. And this is a common dream shared by everyone to write a book. There she is. She's done it. So it's amazing. I'm glad to meet her today and hear her story. It's very inspiring. And she's a coach, a life coach. So that's also good. So that's it for me. बेहतरीन प्रयास है। तनाज एक फ़ाइटर है, मैं तो उनको बहुत सालों से जानता हूँ, 30-35 सालों से जानता हूँ और एक ज़िंदगी में ऐसा एक पहलू आ गया जिसकी वजह से उनके अंदर और एक जो हस्ती दबी हुई थी उस हस्ती को बाहर आने का एक ज़रिया मिल गया, एक रास्ता मिल गया और इतनी खूबसूरत बुक इन्होंने लिखी है। मैंने कुछ पन्ने ऑलरेडी पढ़ लिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये किताब जो है हर वो शख्स पढ़े जिसको ज़िंदगी में थोड़ा सा कहीं अंधेरा नज़र आ रहा है और इससे प्रेरणा ले। और मैं तो कहता हूँ कि तनाज़ को अपना लाइफ कोच बनाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और अपनी मुश्किलों का सामना करें जिस तरह से तनाज़ ने अपनी मुश्किलों का सामना किया है। लॉकडाउन में बहुत सारी कहानियाँ हैं, सब की अलग अलग कहानियाँ हैं। जी, क्या कहना चाहोगे?
देखिए, कहानी हर किसी की ज़िंदगी में कहता हूँ वो एक अपने आप में एक कहानी होती है। तो तनाज़ की ज़िंदगी की ये दूसरी कहानी है कि नॉट जस्ट एन एक्टर, सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक लाइफ कोच जो कि दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़िम्मा उठाए, अब एक नई मंजिल पर चलना शुरू किया जिन्होंने। तो हर किसी की ज़िंदगी का ये जो है इस तरह का अगर एक कोई मोड़ आता है तो ऐसी किताब या तनाज़ से बात करके, तनाज़ से प्रेरणा लेकर के वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तनाज़ को और इस किताब को भी। थैंक यू। So, to talk about If I Can, You Can. It's an amazing book. It is. मैं हिंदी में बोलूँ या आपकी आवाज़ नहीं आ रही? हिंदी में या हिंदी ना? ओके। सो बात करते हैं तनाज़ की इस बुक के बारे में। इफ़ यू कैन सो कैन, इफ़ आई कैन सो कैन यू। एंड बहुत ही सिंपली उन्होंने अपनी लाइफ में जो हुआ है, जो घटनाएं उनकी ज़िंदगी में घटी हैं, उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे वो चल नहीं पा रही थी, और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने उसे ओवरकम किया है और इस किताब में उसे डाला है कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, यू नो, टू अपनी खामियों को लोगों के सामने प्रेजेंट करना। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो बहुत ही खूबसूरती से, क्योंकि मैंने ये पढ़ी है एंड आई रियलाइज कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपनी जो भी वो उनके इमोशंस हैं उनको बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही स्ट्रॉन्गली इस किताब में प्रेजेंट किया है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये आपको कितना मोटिवेट करेगी। जब मैंने ये किताब पढ़ी, सो आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर हर एंड सो हैप्पी कि जो भी ये पढ़ेगा वो बहुत ही मोटिवेट होगा। थैंक यू। बुक मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त ने लिखा है, तनाज़ ईरानी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम लोग का जिक्र है बुक में। इतना ऑनर है हमारे लिए, हमारे जो 3-4 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मेरा नाम है, हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स का नाम है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब। इट्स सच अ मोटिवेशन कि मुझे लगता है कि ये बुक कोई भी पढ़ेगा जो थोड़ा लो फील कर रहा है, थोड़ा डाउन फील कर रहा है, दे विल बी रॉकिंग इन लाइफ। बिल्कुल, इफ़ आई कैन सो कैन यू। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट गिव अप एंड योर ड्रीम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। Just when you're about to give up on your miracle, that's when it appears. So don't give up in life. ये बोला है कि I was a designated nurse in the Bangkok and Dubai trip और कश्मीरा, रोहित और सारा ने उनको बहुत सपोर्ट किया। थोड़ा सा हमने उसके साथ मस्ती किया। We never made her feel as if you know उनका कुछ what do you say प्रॉब्लम है या कुछ पैरों में तकलीफ़ है, एंड हमने बहुत इन्जॉय किया उसके साथ। थैंक यू सो मच। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी इफ़ आई कैन सो कैन यू, तनाज़'s न्यू बुक। यू नो, होप दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ मैनी फॉर हर। बहुत अच्छी तरह से लिखती है तनाज़, जैसे कि हमने सुना, यू नो, दे पीपल रेड फ्रॉम इट। शी ब्रिंग्स हर ह्यूमर इनटू इट, कॉमेडी लाती है, एंड यू नो, बट even talking about such a serious thing that she went through, she has managed to make people smile about it, and that is what Tannaz Irani is all about. Friendship में, set पे, जो भी, you know, whoever comes across Tannaz, she makes you smile, and that is what her strength is, I think. Never giving up, always knowing कि जो भी हुआ है, it doesn't matter. If it's a good thing, great. If it's a bad thing, you can start all over again, and don't be scared about it. And as she says, if I can, so can you.